claim you are more bright, you are more intelligent, more powerful, but this table does not talk to me. So it's not problem of the table, maybe it is equally my problem as well, because I am not able to understand the language of this table. Now, this is a given situation to us, and similarly, even among the human being, some people feel they are very great, and they let others feel they are very small, insignificant. This is not a good practice. And if you really believe in science, which happens to be essentially to be assumed so, everything is important. The problem is only communication between the two. Okay? So coming to the basic aspect, we mentioned and we agreed that proceeding towards oxidation. Now, when you come to oxidation, the latest approach of defining oxidation and reduction is in terms of electron transfer. You say that any system which is losing electron is undergoing oxidation, and any system gaining electron is undergoing reduction. Okay? Now there are many ways, and I missed many examples, but then please be careful that in our life, in our surrounding, there are always oxidations and reductions, and in most of the cases, oxidation and reductions are simultaneous process. Without oxidation, there cannot be reduction. And in the laboratory, or in our workplace, or in our kitchen, at our home, in our garden, we do have several kinds of redox processes. Okay? And for those redox processes, particularly oxidation processes, because oxidation happens to be a very important aspect as it leads to more living systems. So many steps and many reagents are used. You may be aware of potassium dichromate, potassium permanganate, which are used as oxidizing agent in the labs, chemistry labs. Particularly when we perform any experiment concerning redox process. Okay? But this normal oxidizing agent like potassium dichromate, permanganate, or maybe concentrated nitric acid with the help of certain catalysts, they are very nasty and they damage our environment. Okay? So it was realized that we should come out, because when the globe has realized that we should adopt green methods in our life as a whole. And green methods or green technology or green behavior simply means that avoid anything which is hazardous. Even if your words, your statements, your smile, your way of walking, talking, if it leads to hazard, please prevent it. Okay? Now coming to the chemistry, let us have few examples. This I discussed, and down the slab I have the proper scene for the slow breathing of life from non-life was the early earth. The earth conditions favored certain chemical combinations over others, and with the passage of time a direction was set. So it is that direction that we are sitting here, and we are a developed human world, and then there are many technology which has come into existence. Now I just want to submit to this house through the young people of our nation that now we must think to set the global transformations within green chemistry domain. And green chemistry domain, I mean not only doing chemical reaction and chemistry, but also everything in our life which must prevent and reduce and eliminate hazardous things, nasty events. Now I take a very specific example, but then the students sitting there
I think they can also have the view on the details. Here I mention one example of oxidative dealkylation of hydroquinone ethers. You know hydroquinone ethers, 12 students must understand. And I have taken one example, 1,4-dialkoxyarene is a convenient way to synthesize biologically important minaplasto and ubiquinone and their analogues. And the methods for oxidation of 1,4-dialkoxybenzenes, you know benzene ring, okay? And in the benzene ring, above, that is first position, and down, that is fourth position, 1 and 4. If you introduce alkoxy, means OCH3. बेंजीन रिंग आप लोग जानते हैं, दिस इज बेंजीन रिंग, और इसमें आप यहाँ एल्कोक्सी OCH3, so this is 1,4-dialkoxybenzene, and then I carried out, मैंने ऐसा रिएक्शन किया जिसमें यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में CH3 एल्काइल ग्रुप है। CH3 ग्रुप होने से हम लोग बड़े आराम से जो केमिकल रिएक्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक, NMR spectroscopy. We can monitor the conversion of reactant into product having these methyl protons very conveniently. Similarly, we can also have this kind of system. एंड सिमिलर और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आप ले सकते हैं। और आप जानते हैं बेंजीन रिंग जो है एरोमेटिक है, और इसको क्यों एरोमेटिक कहते हैं? हुकेल पाई रूल आप लोग पढ़े होंगे, उसमें 3 कंडीशन है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें प्लेनर रिंग हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके हो, और तीसरी चीज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। 4n+2 n इज नंबर ऑफ रिंग। जैसे बेंजीन रिंग में एक रिंग है तो 4 × 1 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग में 3 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। हमारी रिंग प्लेनर होनी चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये सिस्टम एरोमेटिक कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ रिएक्शंस जो है ये 1,4-डाइएल्कोक्सी सिस्टम पे लिया, और हम लोगों ने ग्रीन मेथड्स यूज किया। मैं आपको बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड या क्रोमिक एसिड, क्रोमिक ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन पा सकते हैं। लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट में जब लैब में आप थ्रो कर देते हैं, या रिसर्च लैब में आप थ्रो कर देते हैं, या केमिकल इंडस्ट्री के जो इफ्लुएंट्स होते हैं उससे हमारी गंगा जमुना और सरस्वती को जाके वो पॉल्यूट करते हैं। वही पानी हमको पीने के लिए दिया जाता है, फिर वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके हमको डैमेज करेगा। तो कोशिश ये की जा रही है आज की डेट में कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन करें, जो भी केमिकल कन्वर्जन करें, मे बी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हम ग्रीन मेथड्स को फॉलो करें। ग्रीन मेथड्स मतलब हमारा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, हमारा रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जो पॉल्यूशन पैदा ना करे, जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, सो आई एम कमिंग टू in modern methods of synthesis, such oxidants are replaced by others which are less expensive,
इजिली अवेलेबल एंड इको फ्रेंडली। तो आज की डेट में जो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन या जो भी केमिकल रिएक्शन करना चाहेंगे वो इको फ्रेंडली प्रोसेस होना चाहिए, रिएजेंट्स इको फ्रेंडली होने चाहिए। क्या यूज किया भाई? हम लोगों ने यूज किया हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाम सुना होगा आपने, H2O2। अच्छा, H2O2 की क्या खास बात है भाई? H2O और H2O2, देखिए H2O तो हमारा जीवन है, आप कहते हैं जल ही जीवन है H2O, और यदि इसी में आपने H2O2 कर दिया तो यदि रिडक्स के हिसाब से हम आपसे पूछें तो क्या फर्क हो गया? देखो H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है, और H2O2 में -1। देखिए यू आर राइट पीपुल। तो ये केवल देखो, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देने से कितना डिफरेंस हो गया एप्लीकेशन में। पानी वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और जल ही जीवन है, ये जीवन है। लेकिन H2O2 जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने -1 कर दिया तो क्या हो गया? है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, it is eco-friendly reagent for carrying out oxidation process, but it is not that friendly as water. But when we use H2O2 as oxidizing agent, it will lead to formation of water, because in the process of oxidation electrons are lost. So when we use hydrogen peroxide as oxidizing agent, it will convert into one hydrogen is replaced by tertiary butyl ion, and that is also equally good for carrying out oxidation rising agent. And if you remember, potassium dichromate, potassium permanganate, they are very powerful oxidizing agent. So हाइड्रोजन peroxide being mild means बहुत कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन peroxide को यूज करके यदि हमको कोई केमिकल चेंज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन तो हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, प्रोमोटर की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है? विच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। कैसे कैटलाइज करता है? आपने केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन प्रोफाइल पढ़ा होगा, पढ़े हैं? तो देखिए कैटलिस्ट जो है, यदि आप पढ़े होंगे सभी लोग, आई होप यू अंडरस्टैंड एनर्जी बैरियर फॉर एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन वी फॉलो द रिएक्शन। This is progress of reaction or reaction coordinate, and this is energy, and suppose energy of reactant is this level and then products is here, so you normally make a energy profile like this. Here is activated complex, and corresponding to this activated complex we have here energy which is considered to be energy barrier for the particular change. Okay, now when we use catalyst, what is the role of catalyst? So to enhance the rate of reaction, catalyst lowers down the energy of activation. Energy of activation is this energy. Energy of activation. So without catalyst, if we have this reaction profile, when we use catalyst, catalyst will lower down energy of activation. Means this energy barrier is reduced to a lower level, and therefore reaction gets speeded up.